Hello everyone, welcome you all. In today's session, we will study about implantation, placentation, parturition and lactation. See, in the last lecture, we were done with the formation of blastula. We got the structure, we got the mass of compactly arranged cells, blastula. This blastula is having two types of cell. One type of cell is forming the outermost layer of cell. This layer of cell is called trophoblast. The function of the trophoblast is to help the fetus to get attached or get embedded in the endometrium. And inner cell mass, this is inner cell mass. What is inner cell mass? Inner cell mass is the mass of cells which will further form the embryo. यानी जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा that will form from the inner cell mass. और ट्रोफोब्लास्ट का काम क्या है? In the embedding of this fetus or this structure in the endometrium. So now we will start with implantation. What is implantation? Implantation is the process of attachment of the embryo, this structure blastocyst, in the endometrium. यानी एंडोमेट्रियम के अंदर अब ये स्ट्रक्चर एम्बेड हो जाएगी. तो हाउ दिस एम्बेडिंग टेक्स प्लेस? So this is called implantation. So see what will happen. We have seen that this is a trophoblast which is getting embedded, which is helping this structure blastula to get embedded in the endometrium. So what will happen now? The cells of this trophoblast will start dividing and will start penetrating in the endometrium. As these cells are dividing and also these cells are releasing some lytic enzymes which are breaking or rupturing the cells of the endometrium, and the trophoblast is entering in the endometrium. So in this way, this blastocyst or blastula will start embedding in the endometrium. After that, we will get the structure like this. Now what will happen? The layer of this trophoblast will be dividing, and these cells, यानी कि the cells of the trophoblast will be differentiated into two types of cells. They will form the two types of cells, one inner cell layer and the other outer layer. देखिए क्या हुआ है कि जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स हैं, ये लेयर है, ये ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स अब डिवाइड कर रहे हैं एंड दे आर फॉर्मिंग टू लेयर्स ऑफ सेल्स. आउटर लेयर, दिस लेयर and inner layer. The outer layer is called, this layer is called syncytiotropoblast, and the inner layer, this layer is called cytotrophoblast. cytotrophoblast. देखिए जब जो ये ट्रोफोब्लास्ट है, दैट इज व्हेन इट इज गेटिंग डिफरेंशिएटेड, तो साथ साथ जो ये ब्लास्टोसिस्ट है दैट इज गेटिंग एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम. यानी कि आप समझिए कि हमको कैसे स्ट्रक्चर मिल रही है कि जो एंडोमेट्रियम है दैट इज गेटिंग एम्बेडेड, जो ये एम्बेड हो रही है, लाइक ये फीटस की एंडोमेट्रियम में एम्बेड हो रही है ये स्ट्रक्चर. आफ्टर दैट क्या होगा? आफ्टर दैट सी दिस इज द fetus body or the blastocyst. This is the endometrium into which the blastocyst is getting embedded. After that, a tissue is formed between the blastocyst and the endometrium or the mother's body. This tissue will be called as placenta. So we have to study placentation. तो placentation क्या है? The placentation is the process of formation of placenta
placenta is a special tissue which makes the connection between the fetus and the mother. यानी fetus और mother के बीच में एक टिश्यू है. Through this tissue या by this tissue, the fetus will be getting the nutrients or oxygen from the mother's body and also will be expelling its waste material through the body of the mother. So here the tissue placenta will form. So how this placenta is formed? See, when the syncytotrophoblast and cytotrophoblast are formed, what will happen in the syncytotrophoblast? I need to rub this labeling. See, in the syncytotrophoblast, many spaces are formed as this syncytotrophoblast is expanding. ये बड़ी हो रही है. And in the syncytotrophoblast, many spaces or vacuoles are formed. These vacuoles are called lacunae. These are called lacunae. After that क्या होगा? जो ये lacunae है, these are the spaces, sacs. After that, these lacunae will start making the connection. ये connection बनाना start कर देंगे and they will form the interconnected network. They will form the interconnected network. And this network of lacunae is called lacunar system. After that क्या होगा? See, this is the fetus and here are, if I draw with red pen, so what is here? These are the mother blood vessels. These are the blood vessels of the mother. Now what will happen? This syncytotrophoblast actually contains some lytic enzyme, some disruptive enzymes. So what will happen? This syncytotrophoblast will be producing some lytic enzymes and these lytic enzymes will start rupturing these blood vessels, blood capillaries. अब इनके अंदर जो क्या है करेंगे, वो इनको रप्चर करना शुरू कर देंगे, जिससे क्या होगा? The blood will come in the syncytotrophoblast and start filling in this lacunar system. Lacunar system के अंदर जो ब्लड फ्लो करना शुरू कर देगा, यानी कि lacunae will be filled with blood. इसी के साथ साथ क्या होगा? जो अंदर वाली ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है जिसको हमने साइटोट्रोफोब्लास्ट बोला, this cytotrophoblast will start forming finger like projections. ये finger like projection बनाना start कर देगी. These finger like projections are called chorionic villi. These finger like structures are called chorionic villi. अब देखिए क्या हो रहा है. Syncytotrophoblast is containing lacunar system or lacunae. These lacunae are filled with blood vessels and the cytotrophoblast is forming the finger-like projection called chorionic villi. Now, as this is the blood and you know that blood contain minerals, oxygen and the nutritive substances. So what will happen? These villi will be getting the nutritive material, minerals, food or the required material from the blood of the mother and these will be supplying this to the inner cell mass. देखिए यहाँ पर एक तो प्लेसेंटा जो बनेगा, अंदर क्या हो रहा है? अंदर जो इनर सेल मास है, साथ साथ दिस इनर सेल मास इज मेकिंग द एम्ब्रियो. अंदर भी डेवलपमेंट साथ साथ हो रही है. तो क्या हो रहा है कि दिस विलाई विल बी गेटिंग द न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स बॉडी. तो क्या होगा कि जो कोरियोनिक विलाई, लैक्यूनर सिस्टम एंड दिस ब्लड वेसल्स, यहां पर एक इनके कनेक्शन से या इनकी जॉइनिंग से एक टिश्यू बनेगा. दैट टिश्यू इज कॉल्ड प्लेसेंटा.
and this process of formation of placenta is called placentation. देखिए प्लस टू एनसीईआरटी के सिलेबस में पूरा जो मैकेनिज्म ऑफ प्लेसेंटा नहीं दिया हुआ है, बट प्लेसेंटा कैसे बनता है, प्लेसेंटा जो है वो लैक्यूनर सिस्टम से बनता है कि व्हेन द लैक्यूनर सिस्टम्स गेट फील्ड विद द ब्लड and from this blood this colonic villi will be getting the nutrition. So this process is called placentation. And what are the functions of placenta? See जो यहाँ placenta बनेगा, this placenta is actually the connecting link between this fetus and the mother's body. So what are the functions of this placenta? See, the first function of placenta is the nutritive function. Nutritive function means कि the fetus gets the nutrition from the mother's body by placenta. Minerals, glucose, whatever is the dietary substances required for the fetus, these substances are obtained by the fetus from the mother's body through placenta. Second is respiratory function. Respiratory function means कि respiration, like जो fetus है that will take the oxygen from the mother's body through the placenta and will release the carbon dioxide as the waste product, and this waste product of the fetus will be released through this placenta. Third, excretory function. Excretory function means the removal of the waste substances produced by the fetus will be released into the mother's body or the mother's blood through the placenta. After that, very important, very important, endocrine function. Endocrine functions means hormonal function. कि जो placenta है that will produce different types of hormones performing different functions in the body. तो what are the hormones? देखिए बहुत important question है that what are the hormones produced by the placenta and their functions. तो जो placenta है ये कौन कौन से जो hormones produce करता है, we will study. प्लेसेंटा, देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि प्लेसेंटा एक्ट एज द एंडोक्राइन ग्लैंड. तो व्हाट आर द हॉर्मोन्स और प्लेसेंटल हॉर्मोन्स? प्लेसेंटा रिलीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. These hormones are actually released from the corpus luteum but also released from the placenta during the pregnancy. As these are the pregnancy hormone, so placenta releases estrogen and progesterone. Placenta releases HCG. HCG, human chorionic gonadotrophic hormone. Gonadotrophic hormone. Placenta also release HPL. HPL क्या है? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन. सॉरी ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन. These are the hormones produced by the placenta. See, estrogen and progesterone are the hormones which help in maintaining the pregnancy during the gestation period. HCG, this hormone is released during the pregnancy and is an indicator of pregnancy. HPL, human placental lactogen, this hormone is released at the time of pregnancy and this hormone causes the development of the mammary gland in the female. As the name is related to lactogen means lactation, तो HPL जो human placental lactogen जो है ये mammary gland की development में help करता है. तो these are the placenta जो है that act as the very important endocrine gland during the pregnancy. So this is all about placentation and placenta. After that, parturition. What is parturition?
Yes, next term is parturition. We will study what is parturition and the mechanism or the hormones associated with parturition. See, parturition is the process of delivery of the baby when the fetus get mature. और जब 9th मंथ का जो गेस्टेशन पीरियड, देखिए टर्म आता है गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन पीरियड क्या है? दिस इज द टाइम पीरियड बिटवीन द कंसेप्शन टिल द टाइम ऑफ डिलीवरी, यानी कि कंसेप्शन से लेकर जो डिलीवरी तक का टाइम है, यानी कि दैट टाइम व्हेन द जो जाइगोट इज फॉर्म्ड, ब्लास्टुला, एम्ब्रियो, ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी कि पूरी प्रोसेसेस होती हैं एंड व्हेन द फीटस इज फुली मैच्योर, दिस इज द टाइम इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड. और ह्यूमन के केस में आप जानते हैं कि 9 मंथ 10 डेज, दैट इज अबाउट जो होता है वो गेस्टेशन पीरियड होता है. तो व्हेन द गेस्टेशन पीरियड ओवर, देन पार्टुरेशन बिगिंस. पार्टुरेशन क्या है? एज आई सेड यू, द पार्टुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फुली जो फॉर्म्ड फीटस फ्रॉम द मदर्स बॉडी. देखिए 280 डेज का टाइम पूरा करने के बाद जब जो फीटस है वो फुली मैच्योर हो जाता है, then the female body get the signal for the delivery. तो how the process of parturition takes place? देखिए क्या होता है, when the gestation period is over, then the fetus releases a hormone. fetus एक hormone release करता है. This hormone will act on the pituitary gland ऑफ द फीमेल, यानी कि मदर की फीमेल की पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा एंड विल स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन. तो जो फीटस है दैट विल प्रोड्यूस ए सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन. दिस हार्मोन विल गो इनटू द मदर्स ब्लड एंड विल एक्ट ऑन द मदर्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू प्रोड्यूस द हार्मोन ऑक्सीटोसिन. And this oxytocin will act in the uterus and will give the signal to myometrium or the uterine muscles to contract, and the muscles of the uterus will contract and the delivery takes place. तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, 9th मंथ तक जब प्रोजेस्टेरोन जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो रहा था, This progesterone was maintaining the endometrium. इसको रिलैक्स रख रहा था ताकि इम्प्लांटेशन होती रहे. तो डिलीवरी के टाइम पे, पार्टुरेशन के टाइम पे क्या होगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लेवल तो पीक पे हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्शन होगी, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बिल्कुल डाउन हो जाएगा, तभी ताकि रिलैक्स ना हो, एंडोमेट्रियम रिलैक्स ना हो, कॉन्ट्रैक्ट होती रहे. तो ऑक्सीटोसिन का जो लेवल है दैट विल इंक्रीज. This oxytocin will be released from the pituitary gland and will act on the endometrium or myometrium or uterine walls and will cause the strong contractions. This oxytocin is performing two functions. See, this oxytocin, first it is causing the contraction in the uterus, and also this oxytocin is giving the signal to placenta to release the prostaglandins, to release the prostaglandins. These prostaglandins are the secretion which further causes more and more contractions. तो पार्टुरेशन के टाइम पे two hormones, oxytocin and prostaglandins are released. Oxytocin is released from the pituitary gland and prostaglandins is released from the placenta. And both the hormones, both the chemicals are causing the strong contraction in the uterus, so that contraction will cause the delivery of the baby. So this is about parturition, the process of delivery of the baby from the mothers. After that, last topic, that is lactation. What is lactation? Lactation is the process of production and secretion of milk from the production and secretion of milk from the
mammary gland in female. The process of lactation is also controlled by various hormones. See, फर्स्ट हमने देखा था सबसे पहले HPL. HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन. जो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन इज रिलीज्ड फ्रॉम द प्लेसेंटा and this hormone causes the development of the mammary gland. It causes the development of mammary gland. यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जब तक प्रेगनेंसी रहेगी तो HP जो प्लेसेंटा है that will be producing HPL and this HPL will be causing the enlargement of the mammary glands. उनका mammary gland का साइज बढ़ाएगा. After that एक हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन. Prolactin hormone it is released from the pituitary gland. ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी. दिस हार्मोन कॉजेज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन द मैमरी ग्लैंड. कि मैमरी ग्लैंड के अंदर मिल्क की प्रोडक्शन करवाएगा कौन? प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी. यानी जब जो डिलीवरी होने वाली होती है दैट टाइम. आफ्टर दैट सिक्रीशन ऑफ द milk is induced by the hormone that is oxytocin. देखिए ऑक्सीटोसिन के दो काम है. एक तो क्या, एट द टाइम ऑफ पार्टुरेशन इट कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन फॉर द डिलीवरी ऑफ द फीटस एंड इट ऑल्सो कॉजेज द रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड. तो देखिए क्या है, HPL human placental lactogen will cause the development of the mammary gland. Prolactin hormone will cause the production of the milk and the oxytocin hormone will cause the secretion of the milk. देखिए डिलीवरी के बाद क्या होता है, जो फीटस है यानी कि जो अभी जो बेबी है that will suck the milk from the female breast. When the sucking takes place the oxytocin increases. Oxytocin increase होगा तभी तो जितना वो सक करेगा बच्चा, जो मिल्क को सक करेगा उतना ज्यादा मिल्क का रिलीज होगा. तो मींस अगर सकिंग इंक्रीज होती है तो ऑक्सीटोसिन का लेवल भी इंक्रीज हो जाता है. तो दिस इज अबाउट लैक्टेशन. तो वी हैव स्टडीड अबाउट इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटेशन, पार्टुरेशन एंड लैक्टेशन. तो दिस इज ऑल अबाउट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, मींस द इवेंट्स which are taking after the fertilization up to the delivery of the baby. So what you have to do, you have to learn these hormones, which hormone is being produced from which organ and what are the functions of these hormones. So this is all about this topic, and in the next lecture we will start with our next chapter of same unit. यानी कि unit number 1 का जो next chapter है that will start in next lecture. Thank you.